In recent months, India has found itself standing at the intersection of tradition and progress as the Narendra Modi government pushes for a uniform civil code, with conservative Muslim leaders and tribal communities appointing themselves as the custodians of culture. This intersection is all too familiar, as the UCC discourse today mirrors the debate around the Hindu Code Bill 70-odd years ago. The script is the same, the act is the same, the drama is the same, but both conversations belong to different Indias. In 1950, Jawaharlal Nehru was feeling increasingly isolated. In a letter to Sardar Patel, he confided that his fellow parliamentarians seemed to be drifting further and further away from him in mind and heart. At that time, Nehru's mind and heart were fixed on social reform, as symbolized by the Hindu Code Bill, which sought to establish modern, secular, personal laws for Hindus in independent India. He was trying to build a great nation in which citizens had equal rights, but Parliament was holding him back. In this edition of Pass Forward, we're going to do a deep dive into the Hindu Code Bill and the way it came to be. From the right to divorce to the right to property, the Hindu Code Bill was looking at changing everything. It was about to turn society inside out and make it stare at an uncomfortable question. What kind of modern nation did India want to be? The debate wasn't about feminism versus patriarchy or tradition versus modernity. Instead, the battle was caught in a narrow binary of women's rights versus culture. The bill, many Hindu fundamentalists said, would destroy the fabric of Hindu society. They framed their resistance as the Dharam Yudh, spiritual war, that was being fought by Dharamveers, spiritual warriors. Ambedkar was caught up in the tension too. He said that any Indian government would be mad to risk provoking Muslims by introducing a uniform civil code. My colleague Humra is going to delve into why Nehru and Dr. Ambedkar stopped seeing eye to eye on the Hindu Code Bill. The story of the Hindu Code Bill begins with a shared vision for a modern, progressive India by its two biggest advocates, Nehru and Ambedkar. But a few years down the line, the relationship crashed and burned with Ambedkar's resignation as law minister. Nehru and Ambedkar had different approaches to the bill. Ambedkar believed that it was Nehru and Parliament's duty to pass the bill in its full, undiluted form. But Nehru found that his hands were tied by his fellow MPs. It was killed and buried, unwept and unsung after 4 clauses were passed, wrote Ambedkar bitterly in his resignation letter. I got the impression that the Prime Minister, although sincere, had not the earnestness and determination required to get the Hindu Code Bill through. Even before Nehru and Ambedkar tried to pass the Hindu Code Bill in Parliament, a resistance movement spearheaded by Hindu groups was already in motion. In March 1949, when the Constituent Assembly, which was established to draft the constitution, was deliberating over the bill, a group called the All India Anti-Hindu Code Bill Committee formed to challenge the proposed legislation. They argued that the government had no right to interfere with Hindu laws, which were based on Dharmashastras. And it wasn't just the fringe groups who were taking up arms against the Hindu Code Bill. Inside the Constituent Assembly, helpless Nehru and Ambedkar heard a chorus of primal Hindu anxieties unfold, accompanied by fissures along class and caste lines. My colleague Raghav Bikhchandani will tell you more about the events that preceded the passage of the Hindu Code Bill. The Hindu Code Bill wasn't devised overnight. It took decades of drafts, discussions, and debates. Even the British gave up and dropped the hot potato after an 18th century push to codify Hindu law. In 1938, the Indian National Congress constituted a planning committee to outline India's post-independence development. One of its subcommittees, comprising leaders like Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit, focused on reviewing the social and legal status of women. Their report, titled Women's Role in Planned Economy, emphasized women's rights in personal laws, particularly Hindu law, and played a key role in prompting the colonial government to appoint the Hindu Law Committee under jurist B.N. Rao in 1941. Caught in the dilemma of choosing between orthodox and liberal views, this committee, which didn't even have a single woman member, distributed an elaborate questionnaire across the country to collect views and eventually submitted its report on June 19, 1941. For a few more years, Committee Raj prevailed. After a study of the Rao Committee report and the draft bills it had prepared, the government set up another Hindu Code Committee under Rao in 1944. This committee toured the country in 1945 and prepared a revised version of the draft bill, now officially the Hindu Code Bill. Notably, the 1947 Hindu Code Committee report shows that public opinion in 1945 showed significant opposition to the bill, with approximately 66.6% of the population expressing their disapproval.
In 1948, the Hindu Code Bill was referred to a select committee of the Constituent Assembly. Parliament took over in 1950, with months of an impasse leading to Ambedkar's resignation in 1951. Ultimately, 4 acts were passed. First, the Hindu Marriage Act in 1955, then the Hindu Succession Act, the Hindu Minority and Guardianship Act, and the Hindu Adoptions and Maintenance Act in 1956. Perhaps radical reforms were more acceptable and people more amenable to change in newly independent India. And perhaps that is why the discourse over the Hindu Code Bill and the current debate over the UCC are so different in tone and tenor. And now, to tie it all together in today's context, we bring you some insights from Dilip Mandal. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबी चौड़ी बहस शुरू हो गई है और इस बार बहस सरकार ने खुद शुरू कराई है क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री और लॉ कमीशन का ये इनिशिएटिव है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई भी बहस भारत में सिविल कानून बनाने की बहस से अलग नहीं हो सकती है और इस दिशा में आज़ादी के बाद की जो सबसे बड़ी कोशिश है वो हिंदू कोड बिल के फॉर्म में आई थी, जिसकी प्रोसेस 1941 से शुरू हुआ और ये बाद में जाकर 1956 में 4 अलग अलग टुकड़ों में लागू हुआ। दरअसल सोशल लाइफ और सिविल लाइफ को कैसे गवर्न किया जाए, कैसे कंडक्ट किया जाए, ये सवाल भारत में बहुत लंबे समय तक उलझा हुआ सा था कि कैसे इसको देखा जाए। आप देखेंगे तो जो क्रिमिनल लॉज हैं, जो पीनल कोड्स हैं, ये आपको काफ़ी पहले ये सेटल हो गया था और लॉर्ड मैकाले की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। हालांकि उनको ज़्यादा एजुकेशन संबंधी उनके एक बयान की वजह से जाना जाता है, लेकिन भारत में आईपीसी जो है वो मैकाले ने दी थी। लेकिन सिविल जो कानून है वो उलझा हुआ रह गया, खास करके हिंदुओं का। मुसलमानों का सिविल कानून तय हो गया था शरीयत या शरिया जिसको बोलते हैं 1937 में, लेकिन हिंदुओं के असंख्य कानून अलग अलग किताबों की वजह से कुछ भी आप उसमें डिफेंड कर सकते हैं। राम का उदाहरण देके आप कह सकते हैं कि एक पत्नी की प्रथा थी, दशरथ का उदाहरण देके आप कह सकते हैं कि 2 से 3 पत्नियां हो सकती हैं। इतना उलझा हुआ था असल में, क्योंकि सारी किताबें अलग अलग बातें कर रही थी और इसके अलावा सारा जो पूरा मामला था वो बहुत ही उलझा हुआ था। इसलिए एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी थी जो हिंदू कोड बिल के शक्ल में बाबा साहब उसको लाना चाहते थे, लेकिन विरोध हुआ उसका बहुत ज़्यादा और इसकी वजह से वो उनको कैबिनेट से इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। तो दोनों को असल में जुड़ा हुआ मामला मानना चाहिए। इसमें सरकार की नीयत क्या है, इस पर अलग बहस हो सकती है। शायद उसकी नीयत सिर्फ पॉलिटिक्स करने की है, क्योंकि अगर इरादा सिर्फ बहुपत्नी प्रथा, एक आदमी एक से ज़्यादा शादियाँ करे, इसको रोकने का है, तो आईपीसी 494 में संशोधन के जरिए बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए यूसीसी की कोई ज़रूरत नहीं है और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता हो वहाँ पर इस यूसीसी का लाना शायद संभव नहीं है। इतने सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, इतने रिलीजियस जो डाइवर्सिटी है, तो ये संभव भी नहीं है या बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, अब आपको ज़बरदस्ती थोपना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार इसमें जो ज़रूरी समाज सुधार के संशोधन है उसको अदरवाइज भी कर सकती है। यूनिवर्सल सिविल कोड या सिविल कोड की भारत में कोई भी चर्चा हो और डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत में जो सिविल कोड, जो नागरिक व्यवहार परंपराएं, इसको रेगुलेट करने की जो भारत में सबसे बड़ी कोशिश हुई, उसके साथ डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है। और उन्होंने ये कोशिश आज़ादी के बाद की, बहुत सीरियस एफर्ट था। उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से कम महत्व का ये काम नहीं है, बल्कि बराबर महत्व का काम है। इतना इम्पॉर्टेंट वो मान रहे थे, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो लाइफ के एक साइड को रेगुलेट करती है, उसके अलावा एक सामाजिक जीवन होता है और उसमें बहुत ज़्यादा अराजकता थी, खास करके हिंदुओं के बीच। और बाबा साहब जब हिंदू बात कर बोल रहे थे तो वहाँ पर एक्चुअली जो आर्टिकल 25 है उसके हिसाब से भी सिख और बौद्ध उसमें शामिल थे। तो इनके, क्योंकि जो विवाह से लेकर संबंध विच्छेद, इनहेरिटेंस, इनके जो कानून थे उसको लेकर कोई एकरूपता नहीं थी। ग्रंथों की बहुलता की वजह से और अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट थे उनके अपने कानून थे, तो बहुत ज़्यादा क्योस था। इसी वजह से आप जो प्रश्न पूछा जाता है कि मुसलमानों को लेकर उन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनका शरीयत पहले से था।
उनको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उनका एक सिस्टम था। तो बाबा साहब ने जब ये कोशिश की तो इसका विरोध आप देखेंगे तो हिंदुओं की तरफ से आया, बहुत एग्रेसिव विरोध था। और इसमें तमाम तरह के लोग, कांग्रेस के काफ़ी लोग, सरोजिनी नायडू वो हंगर स्ट्राइक पर जाने की बात कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। तो ये विरोध ऐसा था कि फेथ और जेंडर जस्टिस के बीच में सरोजिनी नायडू ने फेथ को चुना, रिलीजन को चुना, मतलब ये इतना ज़्यादा क्रिटिकल मामला था। और बाबा साहब को इसकी वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा। जो इस्तीफ़े की 4 वजहें थी उसमें एक वजह, सबसे प्राइम वजह जो थी वो हिंदू कोड बिल था, क्योंकि हिंदुओं की सामाजिक लाइफ को रेगुलेट करने के खिलाफ हिंदू खुद खड़े हो गए थे। आज जब हिंदू संगठन यूसीसी की बात करते हैं तो उनको बहुत, ये हड़प्पा पीरियड की बात नहीं है, अभी अभी कुछ समय पहले तक आप अपने को रेगुलेट किए जाने का इतना ज़्यादा सड़क पर विरोध कर रहे थे और आज आप यूसीसी मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब किसी हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। The present moment is interesting because, unlike in the past, it hasn't been one where we've seen a blueprint of the reforms that are being proposed, says Rochna Majumdar, a historian and professor at the University of Chicago. That's where there's a big difference between the moment of the founding of the Indian nation state and now. The Nehruvian vision was utopian, one in which equality was enshrined in the Constitution. But today, without a draft or a plan, I'm not even sure what we are debating, she added. Thank you so much for watching this episode of Pass Forward. We will have more for you soon.